Welcome to back my channel. Now we discuss about quantifiers. That is the plural form of quantifier. ताने पिला माने quantifiers विषय रे हमें वर्तमान डिस्कशन करिबा ठीक है न। अच्छा quantifier माने कोन सिकुची quantifiers are the words or expressions or phrases that specify how many elements a statement is about. ठीक है ना ताने क्वांटिफायर्स माने कौन पिला माने से कुछ क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस दैट स्पेसिफाई हाउ मेनी एलिमेंट्स ए स्टेटमेंट इज अबाउट ताने गोटे स्टेटमेंट उपरे केते परिमाणर है कि एलिमेंट्स अच्छी बा ऑब्जेक्ट्स अच्छी है कि सेगुड़ा को माने डिटरमिन करंदी दैट इज क्वांटिफायर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय कौन ना वर्ड्स और एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस है कि सो देयर आर क्वांटिफायर्स है कि टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज ताने किछि क्वांटिफायर्स अच्छी जोगुड़ा को लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करिवे है कि किछि अछंदी स्मॉल क्वांटिटीज किछि अछंदी अनडिफाइंड क्वांटिटीज की भी डिस्क्राइब करंती ठीक है तो माने से कहछि देयर आर लगी देयर आर लगी quantifiers to describe large quantities right such as कौन पिला माने से कहछि देयर आर क्वांटिफायर्स किछि क्वांटिफायर्स अछंदी टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज से जो क्वांटिफायर्स दैट मींस वर्ड्स और फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस लाइक दैट डिस्क्राइब टू लार्ज क्वांटिटीज कौन से गुडा को ना से कहछि ए लॉट ठला तो और मेनी और मच एसेट्रा ताने एमिति किछि वर्ड अछि जो वर्ड गुडा को हमर क्वांटिफायर्स हिसाब रे यूज करा जाए टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज दैट इज कोन पिला माने ए लॉट मेनी मच है कि एसेट्रा तापर किछि अछि टू डिस्क्राइब स्मॉल क्वांटिटीज ताने स्मॉल क्वांटिटीज की डिस्क्राइब करे कौन पिला माने से क्वांटिफायर गुडा को बा से वर्ड्स गुडा को से कुछ फ्यू ए बिट ए लिटिल ठीक है तो आउ किछि क्वांटिफायर्स अछि है कि दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब है कि अनडिफाइंड क्वांटिटीज है कि दे आर क्वांटिफायर्स टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज स्मॉल क्वांटिटीज अनडिफाइंड क्वांटिटीज कौन से गुडा को पिला माने से कहछि दैट इज कौन ना एनी लगी और सोम एसेट्रा एमिति वर्ड अच्छी जोगुड़ा को अनडिफाइंड क्वांटिटीज को कौन करे डिस्क्राइब करे तर एग्जांपल ठीक है तो से कहछि देयर आर क्वांटिटीज है कि देयर आर क्वांटिफायर्स टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज ताने एमिति किछि क्वांटिफायर्स अच्छी से माने लार्ज क्वांटिटीज की डिस्क्राइब करिवे जदि हम कहउछन्ती लॉट है कि ताने आमे वर्तमान लॉट रे कोन कहबा है कि से कहछि वी हैव ए लॉट ऑफ है कि टाइम
we have a lot of time we have a lot of time left to do work we have a lot of time don't worry आम लिखा मन कर don't worry तामने से कौन कौची ना ये जो वर्ड हमारा लॉट से कहला वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट डोंट वरी आम पाखे बहुत समय अच्छी से व्यस्त हो ना ठीक है तो तार ये जो लॉट शब्दटा है कि दैट डिस्क्राइब कौन करुच्ची ना लार्ज क्वांटिटी माने आम पाखे बहुत समय अच्छी ठीक है तो आम पे लिखुंट मेनी ठीक है तो अच्छा मेनी जो पे लिखुंट है कि आम लिखा मन कर देयर आर मेनी थिंग्स टू डू टुडे आम लिखुन देयर आर मेनी थिंग्स टू डू टुडे है कि तापर आमको कौन लिखुची मच मचटा पिला माने लार्ज क्वांटिटी डिस्क्राइब करछि केमिति ना सी हैड है कि आम लिखा सी हैड है कि सो मच वर्क टू डू सो मच वर्क टू डू कि तेणु ये जो शब्दटा बा लेटरटा आम नेले बा वर्डटा नेले जो वर्डटा नेले ए लॉट ऑफ ए जो मेनी ए जो मच ये पिला माने दे आर डिस्क्राइब टू कौन लार्ज है कि लार्ज क्वांटिटी के से बुझाऊँगी दैट इज वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम आम पाखे बहुत समय अच्छी देयर आर मेनी थिंग्स बहुत जिनस अच्छी कर ठीक है तो सी आड़े सो मच वर्क टू डू तार बहुत काम करार ठीक है तो अच्छा तापर पिला माने किछि वर्ड्स अच्छी से गुड़ाक आमको स्मॉल क्वांटिटीज की बुझेब कौन ना मन कर अच्छी ए फ्यू ए बीट ए लिटिल एसेट्रा एमती अच्छी है कि धर आम लिखुं ए बीट ऑफ सॉल्ट ए बीट ऑफ सॉल्ट आम तो पिला लिखुं ए बीट ऑफ सॉल्ट है कि ये जो शब्दटा रोच बीट ऑफ सॉल्ट यहीटारे आमको अल्प टिके लुण आम कहते स्मॉल क्वांटिटीज ये बीट ऑफ सॉल्ट माने आमको किसी अल्प टिके लुण ठीक है तो तेना ये जो बीट शब्दटा ये पिला माने बुझाऊँ कौन स्मॉल क्वांटिटीज को ठीक है तो तापर पिला माने आम कहते है कि धर आम लिखुं लिटिल लिटिल केमी बुझाऊँ से कौन द इंजिन नीड्स the engine need a little of oil तना the engine need a little of oil तना एइटे लिटिल माने कौन पिला माने बुझोची ना स्मॉल क्वांटिटीज को बुझोची सेमिति ए फ्यू ठीक है ए फ्यू लगे जदि पिला माने हमें कहिबा ठीक है तो से कौन कहूची दे एट ए फ्यू बिस्कुट है कि दे एट ए फ्यू बिस्कुट्स विथ ए टी है कि अच्छा तापर पिला माने अच्छी अनडिफाइंड क्वांटिटीज अनडिफाइंड क्वांटिटीज कौन ना एनी और सोम आम लिखिले अनडिफाइंड क्वांटिटीज बुझाऊँ कौन ना से कौन जे देयर आर सोम मिल्क देयर आर सोम मिल्क देयर आर सोम मिल्क सेटारे किछि क्षीर किछि माने दैट इज सोम मिल्क ए सोमटा पिला माने एडी कोन दैट अनडिफाइंड क्वांटिटीज केते परिमाण रे क्षीर अछि सेटा डिफाइंड हेई नाही ठीक है तो तापर पिला माने लिखा छी हला कि दे आर नॉट एनी चिप्स एनी चिप्स ए जो वर्डटा सोम एनी ए जो वर्ड गुडा आम नेले दीज आर द क्वांटिफायर्स व्हिच
यूज बा होइछि एक्सप्रेस दी अनडिफाइंड क्वांटिटीज से माने अनडिफाइंड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते ठीक है तो अच्छा तापर पिला माने हमें पढ़िबा से कहूछि कोन ना ये जो क्वांटिफायर गुडा को हमें पढ़िले ए क्वांटिफायर गुडा को हमें कोन पई यूज करचंती हला कि से कहूछि दे आर यूज्ड to make statements like they are used to make statements about variables ये जो क्वांटिफायर गुड़ाक केमिति यूज करा जाबे कहीं से कुछ दे आर यूज टू मेक स्टेटमेंट्स लाइक अबाउट वेरिएबल्स ताने एई गुड़ाक यूज करा होचे टू मेक स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल ता स्टेटमेंट ऊपर वेरिएबल पई ए गुड़ाक सब यूज करा जाउछि आमे जो लिखले देयर आर सो मिल्क एटी पिला माने दैट इज ए क्वांटिफायर व्हिच इज यूज टू हला कि एक्सप्रेस अनडिफाइंड क्वांटिटीज एटी पिला माने वेरिएबल के ना मिल्क एटा हला मिल्क टा हला वेरिएबल ता हमें लिखले कोन ना देयर आर सो मिल्क तने एई जो मिल्क टा ये डिस्क्राइब करूची हला कि एठी जदी मन कर एई जो एठी एई सेंटेंस रे एठी पिला माने मिल्क टा को अमाउंट टा को किए डिस्क्राइब करूची सम द वर्ड सम व्हिच इज अनडिफाइंड क्वांटिटीज तने से कुछ दे आर यूज्ड दैट मींस क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट वेरिएबल तार स्टेटमेंट को जो तैयारी कला बेले तार जो वेरिएबल को डिस्क्राइब करूचे किए ना ये जो क्वांटिफायर्स गुड़ाक ताने दे आर सम मिल्क ये जो सम रहिला एटा जो क्वांटिफायर था सेठी वेरिएबल किए हला ना मिल्क मिल्क से डिस्क्राइब करूची आमे जो लिखिले ए जो ए बीट हला कि लगे जो कहले ए बीट ऑफ अ सॉल्ट ये जो वर्ड बीट बा तो वर्ड जो नेले बीट हला कि ताने ए जो बीट ऑफ अ सॉल्ट एटी वेरिएबल हला सॉल्ट हला कि ताने एट जो आमे लिखले बीट ऑफ सॉल्ट ताने ए बीट हला क्वांटिफायर दैट डिस्क्राइब द वेरिएबल के ना सॉल्ट ठीक है तो अच्छा तापर पिला माने आमे जो रीजनिंग रे चैप्टर रे आमे पढुचंदी क्वांटिफायर्स लागी से कुछ देयर आर टू मेनली यूज क्वांटिफायर्स तारो आमे जनरली दीटा क्वांटिफायर्स हला कि मैथमेटिक्स रे यूज करचंदी हला कि देयर आर टू हला कि देयर आर टू हला कि से कुछ देयर आर हला कि यूज से कुछ देयर आर टू कॉमनली यूज्ड क्वांटिफायर्स से कुछ आमे जिते क्वांटिफायर गुड़ाक पढ़िले पिला माने एई जो क्वांटिफायर गुड़ाक आमे पढ़िले ता भीतर किछि क्वांटिफायर अछंती हले कि लार्ज क्वांटिटी के डिस्क्राइब करूचंती किछि अछंती स्मॉल क्वांटिटी डिस्क्राइब करूचंती किछि अछंती हले कि अनडिफाइंड क्वांटिटीज की भी डिस्क्राइब करूचंती एमे अनेक क्वांटिफायर्स अछंती किंतु आमे जो रीजनिंग चैप्टर रे हमको कोन दिया छि क्वांटिफायर्स विषय रे ना देयर आर टू कॉमनली यूज क्वांटिफायर्स जनरली दी प्रकार आमे क्वांटिफायर्स पढुचंती ठीक है तो गोटे क्वांटिफायर्स हला पिला माने यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ गोटे हला पिला माने एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से कौची वी हैव टू क्वांटिफायर्स दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ गोटे हला एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये जो आम क्वांटिफायर है कि क्वांटिफायर्स माने कौन दैट इज प्लूराल फॉर्म ऑफ ए क्वांटिफायर ताने क्वांटिफायर माने कौन पिला माने से कौची ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड है कि दैट गोज बिफोर ए नाउन टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
तारे गोटे क्वांटिफायर मानेटा आम कौन बुझा से तो क्वांटिफायर्स पढ़ले क्वांटिफायर माने क्वांटिफायर कौन प्लुराल फॉर्म ताने क्वांटिफायर माने कौन गोटे क्वांटिफायर कहले कौन बुझबा से बुझी ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड है कि गोज बिफोर नाउन ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड है कि usually goes before a noun to express the number of objects to express number of objects to express number or of objects ताने गोटे क्वांटिफायर माने आमे कौन बुझिले ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड यूजुअली गोज बिफोर ए नाउन गोटे क्वांटिफायर टा गोटे वर्ड सेटा जनरली गोज बिफोर ए नाउन गोटे नाउन रो बिफोर लागे टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ताने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करिया पई गोटे वर्ड लागे दैट इज ए क्वांटिफायर ठीक है तो ताने क्वांटिफायर काम कौन पिला माने कौन ना इट एक्सप्रेसेस है कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट द अमाउंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट तो अमाउंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट अछि ताकू डिस्क्राइब करे बा ताकू एक्सप्रेस करे किए ना क्वांटिफायर्स तो देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स गोटे हला यूनिवर्सली क्वांटिफायर आ गोटे पिला माने कौन हला ना एक्जिस्टियल क्वांटिफायर ठीक है तो अच्छा ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर माने कौन से कुछ ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर पिला माने कौन ना द यूनिवर्सल क्वांटिफायर है कि इज रिटेन आज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज रिटेन आज इज रिटेन आज ये लिखा जाए द सिंबल है कि रीड आज एक पिला माने कौन पढ़ा जाए रीड आज फॉर ऑल और फॉर एवरी ताने से कुछ जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज सिंबलाइज्ड बाय द सिंबल which is read as for all और कौन for every ठीक है तो ये जो क्वांटिफायर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ए क्वांटिफायर्स मान को आमे सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करंती ताने यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज सिंबलाइज्ड बाय ए सिंबल ठीक है तो रीड as for all और कौन for every मन कर पिला माने हम एग्जांपल कहबा ठीक है तो से कुछ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n आम गोटे मन कर एग्जांपल कहबा क्वांटिफायर्स लगे लिखा से कुछ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n 2n is an even natural number से कुछ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n ताने n बोली जदि हम गोटे नेचुरल नंबर नबा ताने 2n इज एन इवेन नेचुरल नंबर ताने 2n टा हबो गोटे इवेन नेचुरल नंबर ताने ए जो फॉर ऑल ए जो वर्ड पई हेलो यू यूज द क्वांटिफायर बाय द सिंबल हेलो कि ताने फॉर ऑल जहाँ लिखा है लिखा नेचुरल नंबर
n 2n is an कौन even number 2n is an even number है कि ताने n बोली जदि गोटे नेचुरल नंबर रहिबो ताने 2n is an कौन even natural number ताने for the word for all we will be use the quantifier symbol कौन ना that is for all or for every that symbol we will use for the word कौन for the quantifier for all ठीक है तो तापर पिला मन अछि एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ठीक है तो से जो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ता से भी पिला माने सिंबल द्वारा लिखा जाए कौन the existential quantifier like is written as by this symbol कौन that is a taunt letter e सेटा e रो है कि आम जो e लिखुले तार taunt है कि that is by the symbol है कि आम ये symbol द्वारा लिखिले read as एटा को पढ़ा जाए there exists or there is लगी ताने ए जो सिंबल टा लिखिले तान द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज सिंबलाइज्ड बाय द सिंबल है लगी दैट इज द टर्न लेटर ई है लगी रीड एज देयर एग्जिस्ट और देयर इज ताने आमे जोडी देखिबा जे गोटे वर्ड लागि थिबो जो वर्ड टा गोटे क्वांटिफायर्स को बुझौथिबो है कि से क्वांटिफायर्स कौन बुझौथिबो ना एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को बुझौथिबो ताने यू विल रिप्लेस दैट वर्ड है कि बाय द सिंबल ठीक है तो अच्छा मन कर पिला माने आमे गोटे एग्जांपल लिखिबा से कहला देयर एग्जिस्ट है कि देयर एग्जिस्ट an integer x such that 5 minus x is equal to 2 then the word है there exists है that represents a quantifier will replace that word है by the symbol है कि टर्न ई तार बाय द सिंबल एटा को हमें टर्न ई द्वारा रिप्लेस करिबा है कि ता माने हला देयर एग्जिस्ट त देयर एग्जिस्ट एटा पिला माने हला क्वांटिफायर ताको हमें सिंबल ले लिखुचंदी टर्न ई है कि ताने हम लिखिबा या बदल देयर एग्जिस्ट बदल सिंबल लिखिबा एन इंटीजर x such that 5 minus x is equal to 2 ताने मोटा मोटी कथा हला आमे जो वर्ड टा क्वांटिफायर को बुझौथबो हैला कि आमे तो जनरली दी प्रकार क्वांटिफायर्स पढु छथि से दी प्रकार क्वांटिफायर्स भितरे हमर जोडी फॉर ऑल फेजल वर्ड टा जो लिखा जो फॉर ऑल हैला कि आउ किबा फॉर एवरी सेहिटी पिला माने आमे क्वांटिफायर के यूज करिबा हैला कि सिंबल द्वारा आ जो लिखा होथबो देयर एग्जिस्ट बा देयर इजी ता बदले आमे सिंबल द्वारा लिखिबा से जो वर्ड टा को हैला कि आमे क्वांटिफायर सिंबल द्वारा कोन लिखिबा टर्न ई लिखिबा टर्न ई हैला कि अच्छा तापर पिला माने आमे पढिबा नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स आमे जो नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स पढ़िबा ठीक है तो ता माने पिला माने कोन गोटे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रो आमे पिला माने नेगेशन पढ़िबा ठीक है तो अच्छा जतले गोटे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रो नेगेशन पढ़िबा जोडी पिला माने क्वांटिफायर थिबो फॉर ऑल
ये जो फेजल वर्डटा है कि दैट डिस्क्राइब ए क्वांटिफायर बाय द सिंबल आम लिखी ये सिंबल द्वारा ताने ये जो क्वांटिफायर थी फॉर ऑल लगिकी गोटे स्टेटमेंट तैयारी कि तार नेगेशन से कहला नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स ताने जो स्टेटमेंट रे ए फॉर ऑल लगिला सेटा गोटे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कारण क्वांटिफायर लगी माने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है कि से जो क्वांटिफायर स्टेटमेंट को आम जो नेगेशन करवा तार नेगेशन बाहर करवा दैट इज इक्विवेलेंट विथ कौन ना ये जो फॉर ऑल जो आम नेगेशन देले जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट थी यूजिंग द क्वांटिफायर ऑफ फॉर ऑल तार नेगेशन बाहर कला बेले आम को क्वांटिफायर देके लिखिबा ना देयर इज बा देयर एग्जिस्ट or at least one or so माने जोटी आमको यूनिवर्सल क्वांटिफायर देथिबो स्टेटमेंट रे तार नेगेशन बाहर कला बेले आमे यूनिवर्सल क्वांटिफायर ताकू रिप्लेस करबा को क्वांटिफायर द्वारा ना देयर एग्जिस्ट तापरे आमे नेगेशन लिखिबा ठीक है ना अच्छा मने कर पिला माने मु एग्जांपल कहूची all primes are odd ताने जो all primes are odd लिखिला ठीक है तो ताने all primes are odd ये जो all लिखाई थी for all primes all बा every primes are odd है कि for all बा कोन every है कि ताने आमे जो क्वांटिफायर पढ़िले for all है कि और कोन फॉर ऑल फॉर एवरी से कहला ऑल प्राइम्स आर ऑड ये जो क्वांटिफायर लगिला ऑल लगी फॉर ऑल बा फॉर एवरी क्वांटी प्राइम्स आर ऑड से जो ऑल प्राइम्स आर ऑड लगिला ठीक है तो ताकू एत पिला माने नेगेशन करबा एट जो थिला यूनिवर्सल क्वांटिफायर माने कोन दैट इज यूनिवर्सली है कि एक्सप्रेस करूथबो ऑल माने यूनिवर्सली जत्ते अछंती सब प्राइम गुडा को ऑड ठीक है तो तार जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जोटा हमको बुझेला तार एतले आमे नेगेशन बाहर करबा सेतले आमे ए जो यूनिवर्सल बदल रे ता बदल रे आर क्वांटिफायर लिखिबा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कोन लिखिबा पिला माने तार नेगेशन कला बेले लिखिबा देयर एग्जिस्ट a prime which is not odd लगी ताने तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा है कि हमको दिया है ऑल प्राइम्स आर ऑड आमे पिला माने सेठी तो नेगेशन बाहर करबा आमे से एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगे परिबा कोन ना देयर एग्जिस्ट ए प्राइम व्हिच इज नॉट ऑड और आउ थोड़ा आमे लिखि परिबा at least one prime which is not odd ठीक है ना और आमे नेगेशन बागला सोम भी लिखि परिबा कौन ना सोम प्राइम which are not odd जेतले यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा कि हमको दिया जाइथिबो गोटे स्टेटमेंट है कि सेतले दैट स्टेटमेंट रो आमे तो नेगेशन बाहर करबा आमे से यूनिवर्सल क्वांटिफायर को आमे रिप्लेस करबा बाय दी कोन एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आमे विल राइट दैट कोन ना देयर एग्जिस्ट ए प्राइम व्हिच इज नॉट ऑड और at least one prime which is not odd or some primes which are not odd सिमिलरली सही परि भाबरे जतला हम लिखाइ थिबो कोन ना नेगेशन लिखाइ थिबो जते नेगेशन आमे तो लिखिबा नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट हलाई और सम जेतले एई भडिया क्वांटिफायर थिबो कोडी ना द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर थिबो तार पिला माने जेतले आमे नेगेशन लिखिबा दैट इज इक्विवेलेंट कोन लिखिबा फॉर ऑल और फॉर एवरी
लगी ताने एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लिखा कि जो स्टेटमेंट थी तार नेगेशन बाहर कला बेले आम से एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्लेस करके आम कौ क्वांटिफायर्स लिखिक स्टेटमेंट करवा नेगेशन बाहर करवा फॉर ऑल और कौन फॉर एवरी ठीक है। तो आज क्लास पे आम नेक्स्ट क्लास या प्रोब्लेम सॉल्व करवा एक्सरसाइज ओके।